this or this. Do you like the results of these three procedures? Yes, these are the three most common breast surgeries we perform: a breast reduction, a breast lift, and an increase in breast volume using implants. So मोस्ट कॉमन सवाल जो मुझसे पूछा जाता है जब पेशेंट किसी भी ब्रेस्ट सर्जरी के बारे में डिस्कशन के लिए आता है वो ये है कि डॉक्टर, इस ब्रेस्ट सर्जरी से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क तो नहीं बढ़ जाता? So today in this video we're going to bust this popular myth that performing any kind of surgery on the breast can increase the risk of breast cancer. So first let's talk of the most common procedure we perform, one of breast implant. Now बहुत लोगों के दिमाग में ख्याल होता है कि breast implant कर रहे हैं, एक foreign body के अंदर जा रही है, so इससे तो कैंसर होने के chances 100% बढ़ते होंगे. So this is one thing I want to clarify कि breast implants till date have not been reported or recorded to cause a single case of breast cancer worldwide, not only in India but worldwide. There might be other effects of having a breast implant. There could be an infection at times, there could be some cases where the implant does not suit your body, but nowhere has it ever been observed that breast cancer हुआ हो breast implant की वजह से. This is because breast implant डालने से breast का tissue कहीं से भी change नहीं हो रहा, and the breast implant is being put under the breast tissue, not really into it. So breast implants will never cause any kind of breast cancer. The second procedure again which is very common is one of a breast lift, जिसमें हम लूज ब्रेस्ट को टाइटन करते हैं. नाउ दिस कैन बी विद एन इम्प्लांट और विदाउट एन इम्प्लांट. अगेन दिस प्रोसीजर यूजुअली इन्वॉल्व्स जस्ट रिमूवल ऑफ एक्सेस स्किन एंड सम एक्स्ट्रा टिश्यू. इसमें भी कुछ ऐसी मैनिपुलेशन नहीं की जा रही है जिससे कि हम सेल्स में कैंसर प्रोड्यूस कर सकें. सिमिलरली लेट्स टॉक ऑफ ब्रेस्ट रिडक्शन. अगेन दिस इज अ सर्जरी विच मेनी वुमेन सीक बिकॉज ऑफ हेवी ब्रेस्ट, जिससे फिजिकल सिम्टम्स हो रहे होते हैं, नेक पेन हो रहा होता है, शोल्डर पेन हो रहा होता है. सो अगेन डिस्पाइट हैविंग सो मच ऑफ डिस्कम्फर्ट, दैट नैगिंग क्वेश्चन डज प्ले ऑन देयर माइंड कि हम ब्रेस्ट रिडक्शन कराएंगे, बहुत बड़ी सर्जरी है, आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस तो नहीं है. अगेन इन फैक्ट इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट सम पीपल also get breast removed so that chances of breast cancer are not there. So people who have a very strong family history of breast cancer do undergo a procedure called prophylactic mastectomy. इससे क्या मतलब है कि हमने कैंसर होने से पहले ही ब्रेस्ट टिश्यू हटा दिया जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस जीरो हो जाएं. What I'm trying to say is once you remove any breast tissue, instead of causing a breast cancer, it can in fact decrease the chances of you getting breast cancer if you have a family history. So in a crux, in a nutshell, none of these procedures are going to increase the risk of breast cancer. Breast cancer is caused usually by some genetic mutations which are there in your family history, or in some cases by environmental influences. But never do any of these procedures cause breast cancer. However, having said that, अगर आपकी family history है, अगर आप ऐसा कुछ बताते हैं अपने प्लास्टिक सर्जन को, then he or she will guide you whether you are a suitable candidate for this procedure or not, simply because in some cases कोई procedure कराने से cancer detection में problem आ सकती है. So you will have a mammography to rule out any such cancer before the procedure, and he or she will also tell you that you will probably need to keep a check on your breast regularly, not just because of the procedure but as a routine precaution, taking into account your family history. However, if any further doubts linger on in your mind, please feel free to reach out to us and we're more than happy to guide you through it. Thank you.